Hello bachcho, let's read the question. So the question says life cannot be imagined without water, but clean and adequate water is still not accessible to the most of the people in India. India receives 90% of the water from major or medium rivers. It has 14 major rivers, each having catchment area of 20,000 square kilometer and above. While there are 44 medium rivers with a coastline between 2,000 and 20,000 square kilometers. Then there are 53 small rivers, each with a catchment area of 2,000 square kilometers. According to the 2011 census, annual per capita water availability in the country decreased to 1545 cubic meters from 1816 cubic meters as per 2001 census. At present, the situation is even more worrisome. Scientists believe that by 2050 there will be 30% decrease in the availability of water per person. The World Health Organization recommends the availability of 200 liters of water per person per day in urban areas. On the contrary, 140 liters of water supplied per person per day in the country. Water resources in India are predominantly dependent on the monsoon. India receives an average rainfall of 4,000 BCM every year from the rain. It most is vaporized and goes down to the drain. Statistics show that dearth of storage procedure, lack of adequate infrastructure, inappropriate water management have created a situation where only 18 to 20% of water is actually used. The remainder just gets wasted, aggravating the problem of groundwater depletion. On our country's economy primarily rests on agriculture. Agriculture contributes 40% to the GDP of the country and accounts for 60% of the total export revenues. Also, 60% of the country's population is engaged in agriculture and related work. One of the major reasons for water prices in the country is that as the area of irrigated land has increased, the level of groundwater has declined. Currently, India has a gross irrigated crop area of 82.6 million hectares, which is the largest in the world. As the population increases, the water storage capacity of ponds decreases. In fact, wells and ponds go dry after the water decreases at the ground level. तो बच्चों पैसेज को समझते हैं क्वेश्चन करने से पहले. नाउ हम नहीं सोच सकते जिंदगी बिना पानी की, राइट? बट अभी भी लोगों को साफ और शुद्ध पानी अवेलेबल नहीं. 90% इंडिया का पानी मेजर और मीडियम साइज की नदियों से आता है, जिनका कैचमेंट एरिया है 20,000 स्क्वायर किलोमीटर. बाकी 53 स्मॉल नदियों से पानी आता है. अब 2011 के सेंसेक्स पे बात माने तो कंट्री का पानी का स्तर 1545 क्यूबिक मीटर हो गया है 1816, जो 2001 में था क्यूबिक मीटर से. अब और साइंटिस्ट और या रिसर्चर्स ये भी कह रहे हैं कि 2050 तक 30% और घटने की संभावना है. 200 लीटर एक बंदे को पानी चाहिए होता है अर्बन एरियाज में पर डे, बट 140 लीटर की ही सप्लाई है. अब इंडिया का जो मेजर पानी का पूरी खपत है वो बिकॉज ऑफ द रेनफॉल है, और वो 4000 BCM बिलियन क्यूबिक मीटर पर साल होती है. अब ये इसमें से 80% पानी सारा वेस्ट हो जाता है और 20% पानी एक्चुअली यूज होता है बिकॉज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इनअप्रोप्रिएट मैनेजमेंट, और इसको दुखी कर रहे हैं. अब हमारा ये एग्रीकल्चरल सेक्टर के लिए भी बहुत बेकार है, जो मेजर कंट्रीब्यूटर है हमारी जीडीपी का. तो हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी और खपत बढ़ेगी, हमारे पॉन्ड्स ड्राई होंगे और वाटर का स्तर गिरेगा ग्राउंड लेवल पे. नाउ, which of the following about availability and use of water in India is correct? Option A, India doesn't depend on monsoon for water. Option B, less water will be available to the people of India by 2050. Option C, population increase is not reason for groundwater depletion. Option D, most of the rainwater is not available for the use as it is either vaporized or goes into drain. तो बच्चों, इंडिया के लिए कौन सा करेक्ट है अबाउट द अवेलेबिलिटी, कि हमें हमें अवेलेबिलिटी की उससे सोचना है. सो दैट वुड बी ऑप्शन बी, दैट इज लेस वाटर विल बी अवेलेबल टू द पीपल of India people by 2050. Option B. I hope you understood it well. Best of luck.